Letter E only, okay, so only used with E. And for example, étudiant. So étudiant, how it sounds? This sounds as a, okay, a, étudiant, okay, a, all right, étudiant, okay. So next one is हाँ जी मैडम. exoghav, exoghav, okay, or grave accent in English we say. So this is exoghav. So these are, for this we use three letters A, E, and U. And we all got to know this time the accent is on the opposite side, which is on the left side. So A, E, U, we use only these three letters, okay. And इसका example है U. So U, O, U, okay. This is just one example. We will do more examples. Next one is exon circumflex. Okay, circumflex. For this we use five letters A, E, I, O, U. Okay, and the example is forehead, F-O-R-E-T. So example is forehead. Okay, next one is sedia. Okay, thema. Next one is thema. So E, I, and U. These three letters. Okay, nev. So example is nev. Next one is sedia. Okay, and this is the accent, and it is only used with the letter C. Okay, so example is garçon. So song, to make the sound soft, we use this accent. Okay, so for the exon aigu and the exon ghav, okay, so they have different sounds. For example, if I say pe, okay, and etudion, so can you identify the difference? Pe and etudion, pe, me, fe, right? So air and etudion. So a and air. The difference is exo egu and exo ghav. Okay, etudion and air. And second thing is sedia. Okay, so sedia we use this accent to make it soft. Otherwise, we sound it as k. If I put the accent, so this will become as sir sound. Okay. Next one is exothema. Okay, so thema is used. Why do we use this? We use this accent when we want to pronounce that letter, okay, separately. Okay, so otherwise, for example, okay, so let me write one word here. Mhm. Okay, I may not be able to write. Okay, so do you know mice? What is mice? M-A-I-S. Mice as in corn. Okay, M-A-I-S. So for I use the accent tremor. Okay, so because I want to pronounce the letter I separately, that's why I'm using this accent. Okay, so otherwise I would said it like in a combined way. Okay, so when we will be doing more examples, then you will be able to understand it more better. And next one is circumflex. So circumflex is something like we use this letter, there's a story behind this. So first I will tell you that story, then you will be able to understand this. Okay, so why do we use this accent? Okay, so I'm moving now the next slide. Okay, so on this slide, you will find more information. Okay, more information related to these accents. So, les accents en français. Okay, les accents en français. Le plus fréquemment utilisé en français, surtout au début et à la fin de mots. So, the mot means word. Okay, début as in beginning. Début. Okay, début. So hold on. Debut a à la fin. Fin means at the end, or debut as in beginning. So hiphond and fatalité. So hiphond in the beginning, fatalité as in at the end. Okay. Exoghav est utilisé pour distinguer certains homonymes, par exemple la et la, ou et pour la prononciation du dit ouvert, ghev. So this means, we just want to
have the distinguishment between the two words, because we all know what is the meaning of oo and oo. Do you know the difference between these two, oo and oo? Yes, ma'am. So first one is This is or Where? and this is where. where. Yes. So without accent or, and with accent where. Okay. And Where. here, so la la. What is the difference between these two? Ma'am, LA without an accent is used for the feminine, the. And This is the with article, accent, right? This is yes, definite ma'am. article and used And for this is feminine there. there. So with accent, this means there. Okay, la la. There. However, they are pronounced as the same way. So how we can identify the difference between these two? With the help of accent. Okay. So next one is accent circumflex. Okay. Résulté généralement de la disparition de S. Okay. So this time, this is explaining why do we use this accent. Okay. So for example, there is a story when the English people and the French people, the language when it got mixed. So English people were trying to learn French. So, they mixed so many words and the new words formed. So that time, what they did, they removed the S, and instead of S, they just added this accent, which is circumflex. So this uh, accent is basically is used in place of S. So after this accent, if I remove, for example, hospital. So if I remove the S, I will put accent, the letter before S. So here the letter before S is O. So I will put the accent over the E. I mean O. So, and I will remove the letter S. So this will become hospital. Okay. Next one is fohe. So fohe as in forest. Okay. Forest. So S, I just removed or dropped S and put the accent over the E. So this is just mainly because of the disappearance or just removal of the letter S. Okay. Yes, ma'am. Next one is thema. Yes, ma'am. Yeah, thema. So thema is just because I want to speak that letter differently. Okay. So that's why. So do you see these two letters? Mais, MAIS. Yes. Spelling is Ma'am, same. isn't it May? Yeah. So spelling is same, right? Can you tell Yes, me the ma'am. difference between these two? If you see, okay, can you see it properly? Should I make it bigger? Yes. No, no. Ma'am, See, we can see this, ma'am, we ma'am. can see. Okay, so do you see MAIS? First one is used with accent, right? Yes, ma'am. Yeah. And second one is used without accent. Yes, ma'am. And The A is second one added. is but. Yeah, hold on. So first one is a mice, है ना? Mice. So this is because mice. The moment I put the accent over the I, so now this time, what does it mean? I'll have to speak it differently. What is it? How differently? The difference will be I may need to say this way, like A and I, different pronunciation. Okay, so I will say mice. Okay, and next one will be may. Okay, may, May. Yes, MAI, ma'am. may. So I have joined the sound of A and I because I see the I is without accent. The moment I put the accent over the I, so I will say mice. Okay, mice. So A and I, I'm not making it the sound as together. I'm saying it differently. Mice. Okay. Ma'am, does that mean that if that I is having accent, so the next word needs to be pronounced? Yes, yes, exactly. Mice. Yes, exactly. And this one is may. Okay, next one is Ma'am, pehme the ma'am, one pronounce. question. Yes. Yeah. Ma'am, in every I, if we have to use this accent, we will use this thema and say it as I's. I mean, Okay. we will pronounce it as I. Can you Okay. give me some more examples apart from mais? हाँ अभी इसके हम एग्जाम्पल और भी करेंगे ठीक है. अच्छा, ठीक है. Okay, so next one is sedye. So sedye as in pehme the pronounce la let C. Okay, do you see C letter? So this is say or tonk davon le voyelle. ठीक है.
So AOU français. Okay, so this one is saying because if I don't put the accent over the C, under the C, so the sound will be k. So to make it soft, I am adding this. Okay, so this is all. What does it mean? This is actually simplifying because a person who is very new to English, they will get confused whether to use like pronounce C as ka or K. sir. So I am just teaching my younger one alphabets these days. So she gets very confused. No, mama, cake starts with ka, K. K, Yes. not with C. Yeah. So she gets confused in this. Yeah. So This this is is, a simplified yeah. version. Yeah, so we just want to make it clarify more understandable. Like when we put the accent C, so this sounds as sir instead of k. Yes, Okay. ma'am. Yeah. So on the next slide, okay, just read this of your own. Okay, any one of you can read this. Okay, accent ego, Mhm. a. The Ego. accent goes up from egu. Yeah. A. The accent goes up from left to right. It makes the sound make the e sound like a. Mhm. It is only found on the letter e. Mhm. Example: Mhm. Enchante. Enchanté. Pleased to meet you. Yes. So this is Enchante. enchanté. En, Yes, ma'am. enchanté. Enchante. Okay, so ये जो en है ना ये nasal sound है on, ठीक है, not on, On. on Yes, short, ma'am. on और an भी en, ठीक है, en और an, both of them have the nasal sound, not on, but this is on shante, Enchante. yes, not shante again, this is Sean is again nasal sound, on Sean, Chant. yes, Because it is an at yes, on shante, yes, nasal sound. Enchante. Enchanté. Okay. So now But most of the French is pronounced from like the French pronunciation has most of it, it's with the nasal sound only. nasal, yes, enchanté. So first one we are doing okay. So again, we are just what we did on this slide. Like this is how it looks like, and it is used with the letter only E. Okay, and example is étudiant. Okay. So more examples, okay, America, l'école, café, étranger, la télé, répéter. So can you read these words? Yes, ma'am. Hmm, American, hmm. local, cafe, étranger, Étranger. Okay, so this time how you are étranger, going to pronounce it? Étranger. Étranger. Enchante. Okay, America, étranger. Yeah. l'école, ए की साउंड आपको करना है ए, ठीक है? जी. कैफे, étranger, la télé, La répéter, tele, ना répéter. pete. Repete. So now you will be able to understand it more clearly, like how you are going to pronounce the accent egu. ठीक है? Lexo egu. Okay. Example: America, lecal, cafe, étranger, la télé, répéter. So this is all of them. They are giving a sound of air. Okay, air. Yes, ma'am. Okay. Next one is ghav. Okay, ghav. So just read this also. Mm-hmm. Okay, Ma'am, I'll accent read. graph. Okay, read. Accent Apeksha, ghav. you are reading? Yeah, sure. Accent ghav, A. The accent goes down from left to right. When on the letter E, it makes the sound go down. On other letters, it differentiates words that otherwise would be spelled the same. Examples: peh, Fair. father, oo, peh, Who, है ना? father, oo, Fair. or oo, where. Yes, ma'am. पैर मैं fair. So इसमें हम कैसे साउंड कर रहे हैं ए, ठीक है ए, और उसमें क्या था ए अरे समझ में ए हाँ जी, ए ए तू दियो ए पे मैं, ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो पे मैं फे, इनको जब आप रीड करोगे, प्रोनाउंस करोगे दीज वर्ड्स, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर. कोई भी एक दो वर्ड ले लो, इसका पैह और दूसरा तैले, या एतुदियों ले लो, एतुदियों इज बेस्ट एग्जांपल, है ना, एतुदियों,
पे एतुदियो। एक बार रिपीट कर लो तो आपको कंफर्टेबल हो जाएगा बेटर वे से। पे एतुदियो। ओके नेक्स्ट स्लाइड। ओके आई थिंक इसमें तो मुझे लगता है ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ये वाला इसके एग्जांपल रीड कर लो। ए ई और यू है ना घाव, ठीक है। सो लेट्स गो घाव ए ई यू एग्जाम्पल, ठीक है। आ voilà élève ou l'algèbre déjà très promis, ठीक है। एक बार रीड करो। A, voilà, lève, l'élève, ou, l'élève, l'élève, ou, l'élève, déjà, l'algèbre, 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 right? It's l'algèbre, jèbre, l'algèbre, déjà déjà, très, premier. promis है। So ये है ना है। तो ये जो एग्जाम्पल है देखो। और दूसरी चीज ऑन द स्लाइड यू विल आइडेंटिफाई कि हम एक ही वर्ड में दोनों एक्सेंट भी यूज कर सकते हैं, है ना। दोनों एक्सेंट दिख रहा है आपको, देजा हाँ जी। है ना, एलेव। सो इन दोनों वर्ड्स में आपने देखा कि हम एक वर्ड में दोनों एक्सेंट भी यूज हो सकते हैं, घाव एंड एगू, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। ल थेमा ए ई आई ओ यू के एग्जांपल्स हैं, नोवेल, नाइफ, ओके, नाइव, जुएल, जुएल। तो इसमें आपने देखा कि मैंने इसमें मोर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बट इसमें हम ई को जो है ऐसे नहीं पढ़ रहे नोल, है ना, जैसे हम पढ़ते हैं नेव, है ना, नाइफ, नाइव, है ना, जुएल, नोएल। तो नू एल, ने हाँ इफ, जी। नेव, है ना। तो हम इनको इकट्ठा करके नहीं पढ़ रहे, हम इनको अलग से पढ़ रहे हैं, जुएल, जुएल, ठीक है। तो ये इसके जी। मोर एग्जांपल्स हैं थेमा के। ये बहुत कम यूज होता है, ज्यादा यूज नहीं होता, तो इसलिए इसके लिए इतना वरी करने की नीड नहीं है। इट्स जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि जब ये एक्सेंट है तो ये आपको क्या कहना चाहता है कि आपको वो जो उस वर्ड में जो दो लेटर हैं उनको एक साथ प्रोनाउंस नहीं करना, उनके साउंड को मिंगल नहीं करना, ठीक है। अदरवाइज तो जैसे हम ई एन है, ई एन को कैसे साउंड करते हैं, ओ, है ना, हाँ एन, जी। हाँ जी। एन अगर हम बोलेंगे तो इसका मतलब वो हमने उसके ई के ऊपर एक्सेंट लगा दिया थेमा, तो वो बन जाएगा, ठीक है ओके। Yes, ma'am. नेक्स्ट वन इज ला सेदिए। सो इसके क्या एग्जांपल्स हैं, सा, ठीक है, सा, फ्रांसे, And ला लेसों, ल घासों, हेसू, ठीक है। बट विदाउट एक्सेंट, ल काइए, ला कात, ला कोहिबे, ल कूजा, ला कुजीन, ठीक है। सो ये जो है सी से स्टार्ट हो रहे हैं एंड विदाउट एक्सेंट, एंड विद एक्सेंट सा, फ्रांसे, ला लेसों, ल घासों, हेसू, ओके। yes, ma'am. तो हाँ नेक्स्ट, जी मैम। या नेक्स्ट स्लाइड, ओके। ये रीड कर लो एक बार और। कोई भी रीड कर लो। दिलप्रीत आप कर लीजिए। Okay. It's accent circumflex. The accent circumflex may appear over any vowel and signifies that an S used to be in the word following the vowel. Hôpital, forêt, ambush, s'il vous plaît, dégâts. सिल्बू प्ले, देगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये हमने इनसे अंडरस्टैंड किया कि वही जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था वही चीज दोबारा से रिपीट किया हुआ है कि हमने एस और एक्सेंट का रिलेशनशिप बताया हुआ है, ठीक है। अगर एस नहीं है तो आई रिमूव द एस और वहां पर आई पुट द एक्सेंट सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको कुछ इसमें से मुझे लगता है आप ये नोट कर सकते हो, ये वाली स्लाइड एक बार आप, ये आपको जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि कौन कौन से एक्सेंट है, या ये वाली स्लाइड में आपको सिर्फ एक्सेंट लिखना है और एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ना खुद से। Yes, ma'am. This was actually very beneficial. It was very confusing. Yeah, exactly. So now everything is, we can understand of our own, like how to pronounce it.
Yes, ma'am. Ma'am, I have done this, so it's like, ma'am, you are on mute. Okay, all right. So, अपेक्षा आपने भी कर लिया? नहीं मैम, मैं आधे में ही थी। कोई बात नहीं, मैं क्लिक कर लेती हूँ फोटो, आई विल कंप्लीट इट, इट्स ओके। नो, आई जस्ट वांट कि क्योंकि आज हमने सिर्फ एक्सेंट से करने थे, तो दिस इज ऑलमोस्ट डन। ठीक है, एक्सेंट तो ठीक आप है मैम, नो प्रॉब्लम। एक्सेंट के नेम लिख लो। ठीक है, जी 5 टाइप के एक्सेंट्स हैं, भाव है ना, ये सारे लिख लो आप। और इनके एग्जाम्पल लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो आप। और दूसरा क्या लिखना है आपको कि कौन से लेटर के साथ यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हाँ इम्पोर्टेंट जी। इंफॉर्मेशन है। रेस्ट तो ठीक है, आप ले ग्रेजुअली, बट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ये वाली है, एक ये और इसका एग्जाम्पल। जी ये मैम। ये दो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको नोट डाउन करनी है। और ये जो एक्सेंट्स हैं, नेम ऑफ द एक्सेंट, है ना, तीन Ma'am, एक्सेंट। can we just arrange a class for the listening part also, that we should also know na whether we are able to understand what the other person, the native speaker, is saying, Yeah, so like, if it uh, is possible. so next session you want to have a listening? If you ask Yeah, others also if they don't yeah, have any yeah. problem. I mean, we can do listening also. But the simplified version right now, so that Yeah, definitely. So next actually that I believe that that will also let us know how the word is correctly pronounced by a native speaker. definitely. So next session we can have the listening also, right? हाँ जी मैम। And then we can have that question answers after that. Yeah, Like, yeah. Question answer also. So next session we can have the listening, definitely. okay, ma'am. मैम ये जो थेमा को और क्या कहते हैं?